टी चैप्टर 3 का जो लास्ट पार्ट था उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें। नेटवर्क रिस्क कंट्रोल और सिक्योरिटी के बारे में इसमें तो पहले कहा गया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी आपका सिक्योरिटी लगाने के पीछे का पर्पस क्या होता है। तो कहा गया कि टू सेफगार्ड एसेट, यानी जो हमारी एसेट्स होती है उसकी सिक्योरिटी का सेफ्टी के लिए, और टू एंश्योर एंड मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, यानी जो डेटा की इंटीग्रिटी है यानी उसकी आबरू इज्जत बचाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए हम लगाते हैं सिक्योरिटी। तो कितने प्रकार की होती है सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, तो इसमें बताया गया दो। पहला फिजिकल सिक्योरिटी, दूसरा लॉजिकल सिक्योरिटी। तो फिजिकल सिक्योरिटी क्या होती है? फिजिकल सिक्योरिटी होती है टू प्रोटेक्ट द फिजिकल सिस्टम एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। टू प्रोटेक्ट द फिजिकल सिस्टम एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है फिजिकल वाली। ये क्या, फिजिकल जो सिस्टम के एसेट्स है उसकी रक्षा करने का। और लॉजिकल, टू कंट्रोल मैलिशियस एंड नॉन मैलिशियस थ्रेट। तो लॉजिकल सिक्योरिटी वो होती है जो हम सॉफ्टवेयर वगैरह के ऊपर जो लगाते हैं। मैलिशियस और नॉन मैलिशियस थ्रेट टू फिजिकल सिक्योरिटी एंड मैलिशियस थ्रेट टू लॉजिकल सिक्योरिटी इटसेल्फ। ये हो गया हमारा सिस्टम सिक्योरिटी का। उसके बाद में थ्रेट्स क्या होते हैं? A threat is anything that can disrupt the operation, functioning, integrity or availability of a network or system. यानी थ्रेट वो होते हैं, कुछ भी हो सकता है खतरा, जो डिसरप्ट कर सकता है हमारे ऑपरेशंस को, फंक्शनिंग को, इंटीग्रिटी को, अवेलेबिलिटी को, नेटवर्क को और सिस्टम को। अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट यानी कौन सा थ्रेट? ये जब ये अभी जो आईपीसीसी का जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था ना उसमें भी आया था, कितने प्रकार के होते हैं थ्रेट। अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट वो होता है जो ओरिजिनेट होता है मोस्टली फ्रॉम इनएक्सपीरियंस इंडिविजुअल using easily available hacking tools from the internet, done more out of curiosity than with a malicious intent in mind। यानी आप और हम बिना सोचे समझे कई बार कुछ चीजें इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, फिर चलो करके देखते हैं क्या होता है उसमें। Structured threat originate from individuals who are highly motivated and technically competent and usually understand network system designs and the vulnerabilities of those systems। यानी जो इंडस्ट्री के कंपिटिटर्स होते हैं वो करवाते हैं स्ट्रक्चर थ्रेट, यानी जो आपका दुश्मन होता है वो ओरिजिनेट होता है इंडिविजुअल्स हु आर हाईली मोटिवेटेड and technically competent and usually understand network system design and the vulnerabilities of those systems। उसके बाद में है थर्ड थ्रेट, कौन सा होता है? एक्सटर्नल थ्रेट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग आउटसाइड
An organization which does not have authorized access to organization's network originate from individuals or organizations working outside an organization which does not have authorized access to organization's network. Internal threat. फोर्थ है इसमें these threats originate from individuals who have authorized access to the network. ये हो गया अपना थ्रेड्स वाला पार्ट। उसके बाद में वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, यानी कि वो ऐसी इनहेरेंट लिमिटेशंस जो वीकनेस है in the design, configuration, or implementation of a network or system that renders it susceptible to a threat, यानी जिसके द्वारा हमें ये आभास हो और ये लगे कि जो हमारे सिस्टम है इसको थ्रेट और खतरा उत्पन्न हो सकता है। Vulnerability is a inherent weakness in the design, configuration, or implementation of a network or system that renders it susceptible to a threat. तो इसमें कौन-कौन से हो सकती है वो बताया गया। सॉफ्टवेयर बग, यानी कई बार जब हमारा मोबाइल हो चाहे सिस्टम हो चलते-चलते रुक जाता है तो उसमें बग होता है, यानी कुछ गड़बड़ी होती है उसमें। आर सो कॉमन दैट was have developed software bug are so common that was have developed techniques to work around the consequences and bugs that have saving work necessary every half an hour or crash the computer. Timing window. This problem may occur when a temporary file is exploited by an intruder to gain overwrite input and data। जैसे कई बार जो सिस्टम हम छोड़ देते हैं तो उसमें टाइमिंग विंडो वाला बात की गई है यहाँ पे। तो नहीं होता, जब हम चले जाते हैं तो बीच में से कुछ भी हो सकता है हमारे पीछे। इनसिक्योर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, कई बार जो पासवर्ड्स होते हैं वो भी सिस्टम वाले ही लगा लेते हैं।
But vendors we know default password to make it as easy as possible for consumers to set up a new system. That protocol. Some protocols or standards by which information is exchanged over the internet lack any security at all. Some protocols or standards by which information is exchanged over the internet lack any security at all. Trusting untrustworthy information. This is usually a problem that affects routers or these computers that connect one network to another. End user यानी आप और हम. Generally, users of computer systems are not professional and are not always security conscious. The task of a security administration in an organization is to conduct a security program, which is a series of ongoing, regular, and periodic review of control exercises to ensure safeguarding of assets and maintenance of data integrity. एट स्टेप्स है इसमें लेवल ऑफ सिक्योरिटी के. पहला, प्रिपेयर करना प्रोजेक्ट प्लान फॉर एनफोर्सिंग सिक्योरिटी. डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द रिव्यू एंड टास्क टू बी एकम्प्लिश. सबसे पहले हम प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसके स्कोप पर कितना रिव्यू और टास्क है. एसेट्स आइडेंटिफिकेशन. एसेट्स विच नीड टू बी सेफ गार्डेड कैन बी आइडेंटिफाई. यानी जिस एसेट्स को हमें ज़रूरत है सेफ गार्ड करने की उसकी हम पहचान करेंगे. एसेट का वैल्यूएशन करेंगे. वैल्यूएशन ऑफ हार्ड डिस्क डेटा इज मोर देन हार्ड डिस्क. यानी जो हार्ड डिस्क के अंदर आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो आपकी कीमत है हार्ड डिस्क की उससे. थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन यानी कौन सी एसेट के लिए कौन सा खतरा उत्पन्न हो सकता है. Source of a threat can be external or internal, and the nature of a threat can be accidental, non-deliberate, or deliberate. Threat's probability of occurrence assessment. Assessment or the probability of occurrence of threat over a given period of time.
यानी कितनी संभावना है ये ऐसा नुकसान हो जाए। एक्सपोज़र को जो हमने निकाला उसको एनालाइज़ करेंगे, आइडेंटिफाई द कंट्रोल, एसेस द रिलायबिलिटी करेंगे हम, यानी कितना भरोसेमंद होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको। प्रोबेबिलिटी दैट थ्रेट विल सक्सेसफुल, और हम ये संभावना देखेंगे कितना चांस है कि ये खतरा हमारे लिए हो। रिजल्टिंग लॉस इफ थ्रेट इज सक्सेसफुल, और कितना लॉस होगा अगर ये थ्रेट सही हो जाता है तो। कंट्रोल एडजस्टमेंट, the adjustment of control, which means whether over some time period any control can be designed, implemented and operated such that the cost of a control is lower than the network security protocol. Network security is becoming more and more crucial as the volume of data being exchanged on the internet increases. तो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है जब हमारा डेटा एक्सचेंज होता है इंटरनेट के ऊपर। तो प्राइवेसी का मतलब होता है इसमें मीन्स दैट द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सपेक्ट confidentiality transmitted message should make sense to only the intended receiver, यानी जो मैंने आपको भेजा वो आप तक वैसे का वैसे ही पहुंचना चाहिए, बीच में ऊट-पटांग की हरकतें ना होनी चाहिए। Cryptography is the practice and the study of techniques for secure communication in the presence of third party। यानी क्रिप्टोग्राफी एक प्रकार की ऐसी प्रैक्टिस और स्टडी है, तकनीक है जो सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है थर्ड पार्टी की प्रेजेंस में भी। यानी आप किसी को मैसेज भेज रहे हो और बहुत सारे हैं उस ग्रुप में, लेकिन फिर भी आप उसी के लिए जो फोकस करके भेजते हो ना, क्रिप्टोग्राफी है। एनक्रिप्शन इन क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग मैसेजेस इन सच ए वे दैट eavesdropper or hackers can't read it but only authorized parties can। यानी क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन वो टेक्निक है जो एनकोड करता है मैसेज को इस प्रकार से कि जो हैकर्स हैं वो भी उसको रीड नहीं कर पाते हैं, और केवल जो ऑथराइज्ड पार्टी होती है वो ही उसको रीड कर पाती है। Plain text is the message that is to be encrypted. It is transferred by a function that is parameterized by a key. So ciphertext, it is the output of the encryption process that is transmitted often by a message or ratio. Encryption model क्या होता है? The intruder may hear and accurately copies down the complete ciphertext. He doesn't know what the decryption key is and so can't decrypt the ciphertext easily. The art of breaking ciphers known as cryptanalysis. Two basic approaches to encryption. Hardware encryption. Devices are available at a reasonable cost and can support high-speed traffic. हार्डवेयर एन्क्रिप्शन की एक अप्रोच होती है, दूसरी होती है सॉफ्टवेयर एन्क्रिप्शन की। तो जो डिवाइस होते हैं, यानी आपका जैसे पेन ड्राइव कह लो, जो डीएससी होता है वो हार्डवेयर हो गया एन्क्रिप्शन में। और सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? इट इज़ टिपिकली एम्प्लॉयड इन कंजंक्शन विद स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे ईमेल के पैकेजेस जो होते हैं वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर एन्क्रिप्शन। इसी में होता है ऑथेंटिकेशन, मीन्स दैट द रिसीवर इज श्योर ऑफ द सेंडर्स आइडेंटिटी एंड द इम्पोजर हैज नॉट सेंड द मैसेज, यानी जो आपके पास जो मैसेज आया है वो आप श्योर हो कि आपके सेंडर ने ही भेजा है, किसी बाहरी आतंकवादी ने नहीं भेजा। इंटीग्रेटेड डेटा मस्ट अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज इट वाज सेंट, डेटा वैसे ही मिलेगा जैसा हमने भेजा है। नॉन रेपुडिएशन, receiver must be able to prove that a received message can come from a specific sender and the sender must not be able to deny sending it. Authentication, integrity, and non-repudiation can be achieved using digital signatures. Public key encryption can be used to sign a document. Roles of public and private key are different. The sender uses her private key to encrypt the message. The receiver uses the public key of the sender to decrypt the message. In digital signature, the private key is used for encryption and the public key is for decryption. उसके बाद में हम बात की जा रही है यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की, तो ये भी हम इसको यहीं पर विराम देंगे ये प्रोटोकॉल्स कंप्लीट के बाद।
Secure Cell is a program to log into another computer over a network to execute commands in a remote machine and to move files from one machine to another, provides strong authentication and secure communication over the insecure channel. सिक्योर सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें लॉग प्रोवाइड करता है किसी दूसरे कंप्यूटर में ओवर ए नेटवर्क यानी इंटरनेट के ऊपर टू एग्जीक्यूट कमांड्स इन ए रिमोट मशीन यानी अगर हम दूसरे मशीन का जैसे टीम व्यूअर और एनडीएस के माध्यम से एक्सेस करते हैं तो भी हमें एक सिक्योर सिस्टम और नेटवर्क में मिलता है SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर is essentially a protocol that provides a secure channel between two machines operating over the internet or an internal network. SFTP SSH file transfer protocol is a compound computing network protocol for accessing and managing files on remote file system. SFTP encrypts command and data both, preventing password and sensitive information from being transmitted. HTTPS Hypertext Transfer Protocol plus Secure Socket Layer is a communication protocol for secure communication over a computer network with especially wide development of the internet. The security of HTTPS uses long-term public and secret keys to exchange a short-term session key to encrypt the data flow between client and server. तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स तो पहली टेक्निक हमें बताया गया है फायरवॉल आपके लिए तो फायरवॉल क्या है एक डिवाइस है दैट फॉर्म्स द बैरियर्स बिटवीन अ सिक्योर एंड एन ओपन एनवायरनमेंट व्हेन द डेटा एनवायरनमेंट इज यूजुअली कंसीडर्ड होस्टाइल या जब हम फायरवॉल एक ऐसे डिवाइस लगा देते हैं जो बैरियर का काम करता है सिक्योर और ओपन एनवायरनमेंट के बीच में जब बाहरी एनवायरनमेंट है वो बहुत से पूरी तरीके से हॉस्टाइल होता है Site blocking is a software-based approach that prohibits access to certain websites that are deemed inappropriate by management. यानी कुछ साइटें जो है ब्लॉक कर दी जाती है सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है In addition to blocking sites, companies can also lock activity. IDS technologies, network access control. Network access control protects and enforce security policy by granting only security policy compliant devices access to network access. Anti-malware क्या होता है नेटवर्क टूल होता है ये हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लॉक करने के लिए और रिमूव करने के लिए क्या मालवेयर को मालवेयर इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज यानी मालवेयर हमेशा सिस्टम में आपकी जो वीकनेस होती है उस खामियों को हमेशा ध्यान रखता है कि कब इसके ऊपर अटैक करना है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट नेटवर्क मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू कमांड एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस एंड इज जनरली कैरिड आउट ऑफ नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर Maintenance also involves corrective and preventive measures to make the managed network run better, such as adjusting device configuration parameter. Fault management. A fault is an event that has a negative significance. The goal of fault management is to recognize, isolate, correct, and log fault that occurs in the network. Configuration management. Monitor network and system configuration information so that the impact on network operations can be tracked and managed. Accounting management. Accounting management is concerned with tracking network utilization information such that individual users, departments, or businesses unit can be appropriately billed or charged for accounting purposes. Performance management. It enables the managers to prepare the network for the future as well as to determine the efficiency of current network.
Security management. Security management control access to network resources and established by organizational security guidelines. Security management function include managing network authentication, authorization and उसके बाद में नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो कर ही लेते हैं इसको भी, थोड़ा सा टाइम और लगेगा अभी क्योंकि हमारे कितने तो पेजेस हो रहे कोई ज़्यादा नहीं। चलो, a computer network is two or more computers linked together to share information and or resources. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा The Internet is the global computer network or information superhighway. Internet. Internet is a network in organization that uses such as web browser and server TCP/IP network protocol and so on to provide the internet like in the enterprise for information sharing, communication, collaboration, and the support of businesses, communication and collaboration. Internet can significantly improve and collaboration with the internet groupware. Features to improve team and project collaboration. The business value of internet ये क्या पढ़ रहे हैं हम इसके ऊपर फिर से देख लें। इंटरनेट पढ़ रहे हैं ये। These applications can be integrated with existing ISC sources and application and extended to customers, suppliers, and business partners. Web publishing. The advantages of developing and publishing hyperlink multimedia documents to hypermedia database accessible on www servers has moved to corporate internet, business operation and management. Internet are being used as a platform for developing critical business applications to support business operations and managerial decision making across the internet work enterprise. Extranet network links that use internet technologies to interconnect the internet business of its business partner. 5 rules of extranet. Be as flexible as the business. Deploy in internet time. Protect the interest of the data owner. Serve the partner as a customer और ड्राइव इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर। तो ये अपना सेशन है आज का, यहीं पे विश्राम लेते हैं। विश्राम लेते हैं।